हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग करेंगे दिस 3 लेटर ट्राइग्राफ। ठीक है, इसकी साउंड हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टुडे। बट सबसे पहले यू गाइस नो व्हेनेवर वी स्टार्ट अ लेसन, हम सबसे पहले एक ब्लेंडिंग की एक्टिविटी करते हैं। आज की ब्लेंडिंग की एक्टिविटी ये है कि याया को मैंने व्हाइट बोर्ड और मार्कर दिया है। I'm going to show you guys, and I've asked him to make 3 faces: angry face, happy face, and sad face. Yes. So guys, ये है जी यहाँ पे ये happy है. This one is angry. This one is sad. This is sleepy. No. This, What is this? Okay. It was shocked. Okay, shocked or sleepy, and this one is bored. Bored, yeah. Okay. अब Yahya, what you need to do is think of one of the feelings, but don't tell me what it is, what you're thinking. Are you thinking about happy or angry or whatever you're thinking? Think one. Now break the word, and I will try to guess and point to the one that you segmented. Okay. Yeah. O. Did you say this one? Bored? Okay, now can you think of another one? O. E. Did you say sleepy? Yeah. Good. Can you do another one? Do. Sad. O. What? Did you hear that? Shh. Yeah, there's a sh in shocked. Yeah. You're right. So guys, you see, यहाँ पे ये इतनी सिंपल सी एक्टिविटी में क्या हुआ है कि बच्चे को इस तरह से इस गेम के थ्रू एक वर्ड को ब्रेक करना आ गया. So eventually ब्रेक करना उसको ओरली आ गया. इट मीन्स कि जब आप बच्चा स्पेल करेगा ना, उसको आप कोई वर्ड बोलते हैं शॉक्ड लिखो, तो ही विल नो हाउ टू ब्रेक द वर्ड. तो ही इज गोना ट्राई बी एबल टू स्पेल इट and write it. This is the maqsad of segmenting a word. This was our first activity. Can it be? So today we're going to do the new sound. It's also called a trigraph. Yeah. Oh, that's 3 sounds. Yeah, he is very excited. I hope you guys can So see. it has a one sound. Okay. This is a trigraph. You know, first we did digraphs. Di means 2. This is 3 letters. These are 3 letters, but they make only one sound. You know what's that sound? It's the long sound of this letter. What is the long sound of this letter? The short is A, the long sound is I. It makes I. Yes, this 3 letter makes the sound I. Yeah. I. Can you repeat with me 3 times? I. So we can also call this 3 letter I. Acha, yeah. So why do you think that I call it a 3 letter I? Because it has, this sound has 3 letters. So can you write the 3 letter I 3 times? I think it's I. Let me just check the pronunciation. Guys, आप लोगों को भी जहाँ confusion हुआ करे, तो you guys can just Google it. IGH लिखें and pronunciation साथ उसके लिख दें, क्योंकि obviously हम लोग native speakers तो नहीं हैं English के, तो we also have to keep correcting ourselves the right pronunciation. So guys, I was checking this video और ये अच्छी little learners के नाम से है. I sound phonics मैंने सर्च किया तो उसमें ये वीडियो आई. Hello and welcome to को अच्छी लगी वैसे. In today's video, we're going to be looking at the trigraph I, where the letters I, G and H come together to make the sound I. 3 letters, 1 sound. Let's take a look at some words. I. Hi. This is a nice video. It's like videos भी जाने एक अच्छा ऐड कर देती हैं बच्चों की. Okay, 2 times. Write one more time. Write it here. And No. then this is done. Then we're gonna go. इसमें बस मैं याया को रीड करूँगी. ये लॉजिक ऑफ इंग्लिश के साथ ही आती है एक बुक ना, तो लास्ट टाइम दूसरी थी, या इस दफ़ा है विस्लिंग वेल्स की. तो इसमें जो हम साथ साथ साउंड्स लर्न करते जा रहे हैं, साथ साथ उसकी ना इस तरह की कलरफुल सी पिक्चर होती है साथ. एंड देन उसकी साउंड है लॉन्ग वोवल साउंड आई जो होती है, ये इसकी साउंड होती है. एंड देन यहाँ पर उन्होंने फिर इस तरह से ये एक सेंटेंस उसका लिख दिया, नाइट्स फाइट विद ब्राइट लाइट्स.
जस्ट टू शो गाय द चिल्ड्रन कि किस तरह वर्ड्स के बीच में ये वाला जो हमने भी साउंड की है ये आ रही है. सो दिस इज़ व्हाट वी गोना डू नाउ. सो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट वन. शो मी. It's a heart. Tr. Yeah, it's tr. Now I will make the heart of the stars, okay? You have to read it. What is this? Tr. Tr. This is tr. Tr. So guys, right now we're going to do this page. इसमें 2-letter consonants हैं. You guys can see 2-letter consonants. ये सारे and 3-letter consonants. तो बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवानी है कि consonants जब भी साथ हैं 2-letter consonant blends जब आती हैं साथ तो you have to read them together. ठीक है? r के बजाय just say fr. तो बस यार इसकी प्रैक्टिस करें. जो वो सही करते जा रहे हैं मैं उसके ऊपर एक छोटा सा स्टार बनाते जा रहा हूँ. Pull. 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 Look at those outside. Plant. Yeah, okay. What's this blend? Cool. Cool, yeah. Clock. Yeah, Like that's a you're clock. right. Go. Go. Glasses. Yeah, glasses, good. Yeah, extra जो है ना extend activity कर रहा है. See what you guys he's doing now. उसको देख के वो purr नहीं कर रहा है. He's just directly saying purr. This is what you want him to do. So I'm gonna say अब हम dictation करेंगे. Yaya, can you write black? Okay. Mama, you're not writing me on black. Yaya ज़ियाद कह रहा है कि मामा मुझे नहीं स्कूल करा रही. You're not अभी मैं writing कराती me हूँ बेबी another को. one. Do you want to Where's my school? pencil? Eh? Where's my pencil? Your pencil? Yeah. ये जी याया ने ब्लैक लिख लिया. याया मुझसे पूछ रहा था ए के बाद कि यहाँ पे कौन सा ख आएगा तो मैंने उसको रिमाइंड करवाया. ए अगर शॉर्ट साउंड है तो फिर सी के वाला ख आएगा. नेक्स्ट वर्ड इज़ लाइट एंड एल के बाद याया अगेन रुक के उसने एकदम मुझे देखा ही क्योंकि हमने अभी उसमें पढ़ा भी था ना उसकी बुक में भी लाइट आया था तो ही थॉट कि यही वाला आई होगा. तो आई शोड हिम. कैन यू सी इट नाउ? There we can see it. Beautiful. Next word is night. You that one. Yes. Yes, good. Now can you write wish? Wish. Yes. Yes. SH. Can you show us? We cannot see. Show us all the way. Yeah. Oh, okay. Yeah, the next word is snack. Snack. Yes, snack. Sure, snack. है ऊपर सैड भी लिख दिया है. अच्छा ये देखिए याया ने माशाल्लाह सी के लिखा है एंड पे because he knows कि A is making the short sound, so that's why C क्या है. Guys, so this is the next game. ये सारे के सारे high frequency words हैं. देख लें आप भी. पहले भी आपको पता है मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाए थे. हमने सारे जो इस तरह से बनाते जा रहे हैं उनको मैं इस तरह से जमा करते जा रही हूँ. ये सिर्फ एक है और भी है बैक्स. एनीवेज दीज आर ऑल द हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स. इनको मैं इस तरह से स्मॉल इससे छोटे छोटे जो चिट्स में पेपर्स में काट दूंगी एंड देन या 1 by 1 इनको पढ़ेगा. तो गाइस ये वर्ड्स मैंने सारे काट दिए हैं. अब इसमें आप इस तरह से भी कर सकते हैं. आपको याद है मैंने पहले भी गेम खेली हुई है कि ये एक जो है यहाँ वहाँ पे रख दें एक साइड पे एक रूम के एंड दूसरा वाला जो है लेके वो रूम के दूसरे साइड पे कहीं रख दें एंड बच्चा वहाँ से फिर जाएगा इनमें से एक वर्ड पढ़ेगा फिर भागा भागा जाएगा दूसरी साइड पे वहाँ से एक वर्ड पढ़ेगा. सो दिस विल बी अ नाइस एक्टिव गेम फॉर देम रीडिंग. तो गाइस राइटिंग में अब मैंने याया को ABC लिखवाने के बजाय इस तरह से सेंटेंसेस में सोच रही हूँ उसको लिखवाना शुरू करूँ ताकि उसकी प्रैक्टिस हो. वर्ड इनके वर्ड्स के बीच में कैप भी फिर ये सीखे. कैप भी रखना है ये वाली चीज़ भी क्योंकि लिखाई जो चलो अब टीचर ने इसकी अच्छी कर दी है. तो इस तरह का कुछ फिर हम जो है ना राइटिंग में एक्सरसाइज से करेंगे. मैंने सोचना है अभी राइटिंग में एग्जैक्टली मैंने क्या करना है. तो सीन ये है कि राइटिंग के लिए जो टीचर के पास मैं इसको भेज रही थी वो मैं अब छुड़वा दूँगी ना क्योंकि बेसिकली इसकी प्रैक्टिस ही चाहिए थी. राइटिंग थोड़ी बेहतर इसकी हो जाए. अब उसकी हो गई है बेहतर तो हमें ज़रूरत नहीं है. और एनीवेज इसका स्कूल भी शुरू हो रहा है. स्कूल में आप लोगों को पता है कि और को कुछ करवाएं ना करवाएं स्कूल में राइटिंग तो ज़रूर करवाते हैं. तो इंशाल्लाह बस देखिए मैं घर में क्या करती हूँ जब तक ये घर पे है तो कुछ आइडियाज़ देखती हूँ कि राइटिंग में इसको किस तरह से इसकी राइटिंग और अच्छी की जा सकती है. ठीक है. सो एनीवेज दैट विल बी इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. ये मान अल्लाह.